Let's start. Yes, should we wait for 5 more minutes or should we start? I think we can start. Okay. So, first of all, welcome everyone. Now, with snow-capped mountains where glaciers melt and flow, the first rays of the sun makes Mount Kanchenjunga glow. The Nile of Mother Sikkim is River Tista that moves fast and slow. Nested in the arms of Himalayas, cool breezes of love and peace blows. Then Brobium nobile blooms across the mountain trees, singing the songs of love and tranquility. Blood peasant rests in these trees. How blessed are we to live in the branches of the rhododendron tree. Red pandas also love Sikkim and keep climbing the rhododendron tree. From mountains to valleys, everything is fresh and green. Sikkim has a rich heritage and it is yet to be seen. Different cultures and languages add depth and beauty to it. Travelers and guests are always astounded by the beauty and tranquility of it. The song of love and peace is embedded deep in the heart of every Sikkimese. Watching the beautiful mountains, this is how the day starts. People living here are the kindest souls you will ever see. This is the ode to Sikkim who fosters this mini world in its entirety. नमस्ते खामरिमो हेलो मैं हूँ शिवाली ताई आप सबकी आज की ड्राइवर कम पायलट कह सकते हो क्योंकि वर्चुअल सेटिंग में हम एक जगह से दूसरी जगह उड़कर ही जाएंगे हम इसे हिचहाइकिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हम किसी और के वीडियोस का सहारा लेंगे सिक्किम घूमने के लिए गौरांशी ताई और आनंदिता ताई आज के आपके टूर गाइड्स हैं एंड तो आप सब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सिक्किम की सैर के लिए चलते हैं यात्रियों के लिए छोटे से इंस्ट्रक्शंस है कृपया मेरे स्क्रीन को पिन करके रखें ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे और अपने माइक को हमेशा म्यूट पे ही रखें चैट बॉक्स में इंटरैक्ट करते रहना और अगर आपको नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बाकी सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए अपने पास स्नैक्स और स्वेटर लेके बैठना क्योंकि बहुत ठंडी होने वाली है सिक्किम में अब सिक्किम की सैर करने से पहले एक छोटी सी झलक देख लेते हैं कि सिक्किम है क्या of India, small but an exotic state, nestled in the lap of mighty Himalayas, surrounded by the precipitous and looming mountains and frozen lakes. Monasteries and mysterious rituals. Sikkim is a land of diversity and varied in culture. Religion, traditions, flora and fauna, and arts and artifacts.
Sikkim, now being one of the most progressive state and a full-fledged organic state. नेक्स्ट। अब आप सबने एक झलक देख ली है सिक्किम की, तो हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन है स्मोगो और चांगू लेक। स्मोगो लेक काफी बार सोंगमो लेक या चांगू लेक भी बोला जाता है। ये ग्लेशियर लेक है ईस्ट सिक्किम रीजन में, जो 40 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक, जो कि सिक्किम का कैपिटल है उससे। ये लेक लोकेटेड है 3753 मीटर सी लेवल के ऊपर, और सर्दियों के समय ये पूरी तरीके से जम जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये हर सीजन में अलग कलर रिफ्लेक्ट करती है, इसके लिए सिक्किम के लोग इसको पूजते हैं। चलिए इस जगह को और अच्छे से देखते हैं। Freezing cold. Yeah, it's really close to the India-China border, Natula Pass, and it's in Sikkim. It's absolutely gorgeous. I feel like I'm in Switzerland right now, and it's amazing. This is the lake. It's actually a holy lake. So just look around. There's snow on all sides. The water is beautifully green, and you've got yaks around. You've got lots of stalls around. So I'm going to take you everywhere. So come on, let's take a look. So I found my yak, and I'm going to go for a yak ride. So I've obviously got the craziest handler who is the loudest, brashest one of the lot. Everyone else seemed to be walking calmly, but mine was like crazy. So at Triangle Lake, you have a small little market where there are lots of shops here, and you can buy woolen stuff, gloves, gum boots, basically a lot of things I think that come from across the border from China. And yeah, it's really fun. So let's take a look. You can also hire gum boots just for your visit here if you don't have the appropriate footwear. A nice colorful jacket. So there are no proper restaurants around here. They're just these little small stores.
ओके, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं, विच इज नथुला पास। और इधर बहुत ज्यादा ठंड होती है, सो सब अपने गर्म कपड़े पहन लीजिए। नथुला पास एक माउंटेन पास है जो हिमालय के डोंगक्या रेंज में है। डोंगक्या रेंज lies between China's Yaodong county in Tibet and the Indian states of Sikkim and West Bengal and South Asia. ये पास कालिम्पोंग और गैंगटॉक के टाउन्स को लोअर चुम्बी वैली के टाउन्स और विलेजेस के साथ कनेक्ट करती है। अब आप सब ये जगह थोड़ी सी घूम लीजिए एंड बी वेरी केयरफुल बिकॉज ड्यू टू हाई एलिवेशन द ऑक्सीजन लेवल्स हियर आर वेरी लो। सो बी वेरी केयरफुल एंड अच्छे से घूम लीजिए इस जगह को।
अभी सबने बर्फ में बहुत खेल लिया। अब हम जो अगली जगह देखने वाले हैं, वो हमारे देश के जो आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। कोई गेस कर सकता है क्यों या कोई बता सकता है ये कौन-सा जगह है? अपने आप को अनम्यूट करके बता दो। अ, कोई गेस करना चाहता है? Nathula Pass. नहीं। कुछ नहीं होता। हम जहाँ पे आए हैं, इसका नाम है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। तो ये माना जाता है कि जो बाबा की आत्मा है, वो अभी भी जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो ये हायर एल्टीट्यूड ईस्टर्न हिमालय रीजन पोस्टेड रहते हैं, उनको बचाती है। तो बाबा की जो कथा है, वो आज से 35 इयर्स पहले चालू होती है, जब वो सिपाही हरभजन सिंह थे 20 पंजाब रेजिमेंट के, और वो लापता हुए थे। उनको ढूँढने के लिए एक सेना निकली थी, जिन्होंने 3 दिन बाद उनकी बॉडी ढूँढी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद सारे जो सोल्जर्स हैं, उनको अपनी बॉडी तक पहुँचाया। तो सारे सोल्जर्स सारे सोल्जर्स ने उनके नाम पे समाधि की, और अब ये माना जाता है कि बाबा की जो आत्मा है, वो अब तक सारे सोल्जर्स की रक्षा करती है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट है। चलो इसे अच्छे से देखते हैं। मैं बताता हूँ। ये जो बाबा मंदिर है, वो जो बंकर आप देख रहे हैं, ये बंकर है। ये बाबा जी जब जिंदा थे उस टाइम ड्यूटी करते थे। ठीक है। इसका एक्चुअल कहानी ऐसा है, बाबा जी 1966 में फौज में भर्ती हुए थे, और ये पंजाब रेजिमेंट यूनिट में ये इनका भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग करके पंजाब रेजिमेंट 23 पंजाब में ये पोस्टिंग आए थे। तो इनकी 23 पंजाब टुकला जगह का नाम है, वहां पे इनका बटालियन हेडक्वार्टर रहता था। और बाबा का हरभजन सिंह जो थे बाबा जी, वो इसी बंकर पे वो जिंदा थे तो ड्यूटी देते थे। तो इनकी पूरी फौज डोकलाम में रहती थी, आगे पूरा चाइना मतलब जीरो लाइन पे। तो बाबा हरभजन सिंह को आदेश मिला था कि उन जवानों के लिए राशन पानी खच्चर में लेकर जाना है। तो इधर आगे में है फ्लैग हिल, फ्लैग हिल के बाद है जगह का नाम डेंचुकला। तो 1968 4 अक्टूबर का दिन था। तो ये जब जा रहे थे तो उस टाइम काफी बारिश और बारिश चालू था। तो उसी में वो बारिश में बह गए थे, और बह के पूरा वो बर्फ में दब गए थे, और उसमें ही उनकी मौत हो गई थी। और जब फौज ने उसको ढूंढा तो नहीं मिला। तो सपने में उनका दोस्त जो था प्रीतम सिंह, उनके सपने में आया कि मैं यहाँ पर हूँ। तब फौज ने शुरू में नहीं माना, फिर दोबारा फिर सपने में ना, तो लोगों ने जब जाके देखा उस जगह पे, तो रियली में उस जगह पे हरभजन बाबा साहब मिले, उनके सामान मिले, खच्चर मिले, सब मिले। फिर वो सपने में फिर आए कि मेरा जो डेड बॉडी है, इस जगह का नाम है चौकिया चू, बोले कि जिस बंकर में मेरा ड्यूटी लगता है उसके नीचे मेरा डेड बॉडी को समाधि दे दिया जाए। मैं इधर ड्यूटी करूंगा, चाइना कुछ भी करेगा 72 घंटा पहले मैं अलर्ट कर दूंगा। तो उसी टाइम फौज ने उनका डेड बॉडी को लाके यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है, उसके अंदर उनका डेड बॉडी समाधि दिया गया है। जाके देख सकते हैं बाहर से। और ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब ऐसा है, यहाँ पे जो भी यूनिट रहती है, हाँ। वो यहाँ पे भंडारे करती है और अपनी यूनिट की एक पहचान यहाँ पर छोड़ के जाती है। अच्छा अच्छा। यही है। बाकी बाबा जी का हम सेवा करते हैं अभी भी। हालांकि बाबा जी नवंबर 2014 में इनको ऑनरी कैप्टन रैंक दे के इनको फौज से रिटायर किया गया। इनका माँ जब तक जिंदा थी इनको सारा सुविधा मिलता था। और बाबा की एक्टिविटी अभी कुछ कम है, जबकि फौज जब ये ऑन ग्राउंड जब इनको फौज में रखा गया था उस टाइम एक्टिविटी ज्यादा था। अभी है, बाबा आज भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और एहसास हमें है कि बाबा आज भी हैं इस तरह। उनके लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया, जो है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। ये मंदिर गंगटोक के जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से ही लगातार ड्यूटी देते रहे हैं। इनके लिए उन्हें बकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है। नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहां तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे, उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होने लगी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास की मनाही है। लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी देते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज पुनः सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर में सलवटें पाई जाती हैं। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सैनिकों और लोगों दोनों की आस्थाओं का केंद्र है। इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले बाबा की धोख लगाने आता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब सी मान्यता ये भी है कि ये मंदिर बोतल से भर ताई, मेरे को पूछना था कुछ। यस। एक्चुअली ये मतलब थोड़ा अनबिलीवेबल नहीं था क्या? मतलब मुझे ऐसा थोड़ा अलग ही लगा वो कुछ तो। यस, इसके ऊपर ना आप यूट्यूब पे एक शॉर्ट फ़िल्म है, देख सकते हो, प्लस माइनस करके है। ओके, मतलब ये सच्ची में है कि अब ये एक ऐसे ही बिलीफ है, तो अब इतने सोल्जर्स कहते हैं तो देयर माइट बी सम वैलिडिटी टू दिस, बट nonetheless he served for our country, he did so much, so as a honor of respect we can consider that place holy. या ओके, ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिविटी या फिर एक कुछ स्ट्रांगनेस सबको मिलती है। तो इस वजह से तो हम रख ही सकते हैं ना उसे। हाँ, क्योंकि जैसे ऐसे जो रीजन्स होते हैं जो हिमालयाज़ पे या ऐसे माउंटेन रेंज पे होते हैं इतने हाई एल्टीट्यूड पे, तो इधर मतलब जो सोल्जर्स रहते हैं उनके लिए भी मतलब रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना ठंड रहता है कि वो बहुत बार मतलब अपनी ड्यूटी पे ऐसे जम भी जाते हैं। तो ऐसी जो जगह रहती है उनके लिए एक हिसाब से स्ट्रेंथ और पावर देती है उनको, कि और वो विल पावर भी उनकी बढ़ाती है कि वो ऐसे हार्श कंडीशंस में भी हम सबको प्रोटेक्ट कर सके। तो एक हिसाब से जैसे हम लोग भी कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन में मानते हैं जिसके पीछे ऐसे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता, तो वैसे ही उन लोग के लिए ये एक वैसी जगह है जो उनको स्ट्रेंथ देती है। तो हमें भी इसके लिए ऐसी जगहों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जस्ट क्योंकि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें ये इलॉजिकल लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें बाकी लोग के भी जो बिलीव्स है उसको वैल्यू देनी चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस ताई। तो फिर अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन में जाते हैं। सो अब हमको एक्चुअली थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अभी हम लोग ईस्ट सिक्किम में थे, अभी हम लोग को वेस्ट सिक्किम में जाना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। सो यू कैन सी आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट रादर। सो किसी को पता है इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? इफ एनी टूरिस्ट वांट्स टू वॉलंटियर। एनीवन? व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? बचपन में हम लोग सब पढ़े हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुरी।
Okay, so nevertheless we are moving on. So ये कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक के ऊपर रखा गया था. वी ऑल नो दैट इज कांचनजंगा. ये पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2016 को जुलाई मंथ में ऐड की गई थी. ये इंडिया की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट बन गई. The wild dogs in the Kanchenjunga Biosphere Reserve belong to the rare and genetically distinct subspecies C.A. primavus. Zoology students ने शायद इसका नाम सुना होगा. और इस पार्क में एक्चुअली बहुत सारे मैमल्स की स्पीशीज है जैसे स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, स्लॉथ बियर एटसेट्रा. ऑल्सो एक मिनट, आई जस्ट शो वन थिंग. जस्ट 1 minute. सो ये बर्ड को कोई पहचानता है? Anyone knows about this bird? Sky का background. You can see, right? Okay. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपको पता है, इन केस आपको अनम्यूट नहीं करना. ओके, सो एक नई प्रकृति की बर्ड जिसका नाम है हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश. इसको ये वाला बर्ड इधर 2016 में पाई गई थी. इट्स साइंटिफिक नेम इज जूथेरा सालीमालियाई. द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस पार्क इज डाइवर्स. सर्दियों में इस पार्क में बर्फ गिरती है. सो अभी एक्चुअली बर्फ गिर रही है. दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग आवर स्वेटर्स एंड ऑल. ऑल्सो ये जगह ट्रेकर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है. सो पार्क में घुसने से पहले आई विल आस्क एवरीवन टू बी क्वाइट, वरना हमें कोई स्पीशीज नहीं दिखेगी. और अच्छे से टूर लीजिए, और कोई डिफरेंट स्पीशीज दिखी तो प्लीज नोट कर लीजिए. वी नेवर नो व्हाट वी माइट सी. चलिए अब टूर कर लेते हैं.
अब इतनी सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व देखने के बाद हम एक जगह जा रहे हैं। इधर जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं भारत की सबसे ऊंची लेक्स में से एक। कोई बता सकता है इस जगह का नाम? अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं इस लेक का नाम है गुरु डोंगमर लेक। तो ये 17,800 फीट ऊपर है सी लेवल से। तो इधर सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। और ये जो लेक है, ये जो हिंदूज है, बुद्धिस्ट और सिख्स है, उनके लिए बहुत ही सेक्रेड प्लेस है। और ऐसा भी कहा जाता है ये जो लेक के आसपास का जो एरिया है, इधर जो इसको एक हिसाब से एक मैजिकल प्लेस समझा जाता है, क्योंकि इधर जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं आप देख पाओगे। और इस लेक के आसपास का एरिया जिसे हम गुरु डोंगमर बोलते हैं, इधर आपको याक, ब्लू शीप और जो जो भी हायर एल्टीट्यूड की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो दिखती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये विंटर में ये लेक पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। बस एक पार्ट है जो कभी नहीं होता है। ये कहा जाता है कि जब गुरु नानक जी इधर आए थे, उन्होंने अपनी स्टिक उस एरिया में डाली थी और तब से वो पार्ट फ्रीज होना बंद हो गया है। तो चलो अभी हम ध्यान से देखते हैं, और इधर ज्यादा चिल्लाना नहीं वरना आपको एकदम ब्रेथलेसनेस फील होगा। एंजॉय। Yummy. Ambo. So guys, this is India's highest altitude lake at 17,700 feet. चलो नीचे चलते हैं. Look at this. Look at this. क्या बोलूं मैं? शब्द नहीं है मेरे पास. मुझे लगता है कि आपको जन्नत में जाने के लिए मरना नहीं पड़ता, आपको बस जीते जी अच्छी जगह में जाना पड़ता है. कुछ लोगों के लिए ये जगह सिर्फ एक लेक है, बट आई डोंट नो व्हाई आई फील सच अ पोएटिक कनेक्शन विद सम प्लेसेस, एंड दिस लेक गिव्स मी एग्जैक्ट दैट लव.
यहाँ ग्लेशियर्स है, यहाँ पे पूरी लेक है और लेक के नीचे जो पानी बह रहा है वो दिख रहा है यहाँ से, सो इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल। सो serene, सो काम, सो ब्यूटीफुल। वैसे तो दुनिया में सब कुछ है लेकिन ये कुछ और है। गुरुडुंगमा लेक की खास बात यह है कि इस लेक का एक पार्ट एक्सट्रीम विंटर्स में भी फ्रीज नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लोकल बिलीव्स, जब गुरु डोंगमार यहाँ से गुजरे उन्होंने देखा कि लेक कंप्लीटली फ्रोजन है और विलेजर्स और वाइल्ड लाइफ के पास पीने का पानी नहीं है, तो उन्होंने इस लेक के एक पार्ट पर अपना हाथ रखा और तब से इस लेक का वो पार्ट कभी फ्रीज नहीं होता। That's why this lake is known as Guru Dongmar Lake and it's considered to be a sacred lake for locals. ऐसा लगता है कि उस वाले पहाड़ के पीछे मतलब भोलेनाथ बैठे होंगे। And they're like, अच्छा जी, राजस्थान से तुम इतना ऊपर आ गए। Another thing that I want to put into notice, guys, that do bring a control bottle because if you're bringing plastic here, it's sad for the nature. तो जरूर एक ऐसी बोतल लाइए जिसमें पानी गर्म रहता है, you can drink it here. यार मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि लोग इतना ऊपर आकर इतनी ब्यूटीफुल जगह को भी गंदा करते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी को यहाँ पे सफाई करवानी पड़ी। सीरियसली? ओ भाई, क्या नाम है आपको? राहुल। चैनल नेम मिस्टर राउंड ट्रिप। मैं आपके बहुत सारे इसके बाद बस बेहोशी की हालत में चलते चलते पहुंच गए। तो यार इसके अलावा एक जेन्युइन रिकमेंडेशन देना है कि ये जो ट्रिप है ये मैंने बुक की थी। अब हमने लेक विजिट कर ली है, अब हमें एक छोटी सी बस ट्रिप लेनी पड़ेगी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तब तक सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो, हम लोग प्रॉपर बस ट्रिप वाली फील्स लेते हैं। चलो वाइब करते हैं साथ में। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो पर डाल है
सूरज की बाहों में अपनी जिंदगी गिरने सांसों में सूरज की बाहों में अपनी जिंदगी गिरने सांसों में बातों में रोशनी सो अब हम अपने स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब आपको इस जगह के बारे में आनंदिता ताई बताएंगी, जो आज की हमारी टूर गाइड है। थैंक यू गौरांशी ताई। सो हम लोग बहुत सारे नेचुरल प्लेसेस देख लिए। सच में सिक्किम की प्राकृतिक सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। अभी हम लोग एक दूसरी जगह घूमने आए हैं जहां पर हमको हिस्ट्री दिखेगी सिक्किम की। सो आप में से कितने जन को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन। सो दिस इज नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, जो मेरे पीछे है और आप देख भी सकते हो सामने। सो हर एनआईटी में इंजीनियरिंग नहीं होता, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। सो ये एक तिब्बत म्यूजियम है गैंगटॉक में, जो सिक्किम के 11 कोग्याल सर ताशी मंग्याल के ऊपर नेम्ड है। This institute has promoted research on the religion, history, language, art and culture of the people of Tibetan culture, which includes Sikkim. ये म्यूजियम में टिबेटन कल्चर, टिबेटन वर्क और हिमालयाज की सबसे ज्यादा कलेक्शन है टिबेट के बाहर। इसमें रेयर कलेक्शंस ऑफ स्टैचूज, कॉइन्स और थांगकक्स विच आर स्क्रोल्स विद हैंड पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिलती है। चलिए इस जगह को थोड़ी सी देख लेते हैं। My name is P.W. Ringzing. I'm the director of this institute. So I'm recently, say about 4 months, I've come here as a director from the state government. I'm a retired secretary in the government, right? So now I'm here to take charge of this institution. So this institute basically was established in 1957. The background is something like during that time, once His Holiness 14th Dalai Lama, he had visited Sikkim while going to India to celebrate 2500 birth anniversary of Lord Buddha. So after celebration, so while he was coming back, he was going back to Tibet, his own country. He had to stay in Gangtok for some time because of there was a landslide in the border areas. So I think he had to stay here for about 2-3 weeks. So during that time, our Chogyal, that time Sikkim wasn't the state, it was a country. That time our Chogyal, Myong Chogyal, Tashi Namgyal, the 11th Chogyal of Sikkim, and the crown prince of the time, late Palden Thandrum Namgyal, and His Holiness had some understanding and they have decided to set this institution. Why? Because, you know, there was already a political turmoil in Tibet. There was a disturbances in Tibet, and it was rest assured that China was attacking Tibet. No? So in order to protect the Buddhism, its culture, its tradition, its artifacts, whatever it is, it was sure that it's going to be disturbed in Tibet. So in order to protect all those assets with the religion, and to propagate more religion later on all over
in India, Sikkim, and internationally. So this institute was established. So during that time, His Holiness he had a foundation site that yellow stone, no? Yellow stone. It was founded by His Holiness Dalai Lama, and subsequently, after it was sometime in 1957 February, his Prime Minister of India at that time was Jawaharlal Nehru. He had come here, so he had inaugurated this. Inauguration was done by the Jawaharlal Nehru, or Prime Minister, the first Prime Minister of India. So after that, what happens was, like something was then in Sikkim by blessing of our Chogyal, our king. So this institute was started. So since that period onwards, till 1975, the Chogyal or the king, okay, he was the president ruling. He was taking care of everything because that time it was a country. So after in 1975, when Sikkim became part of India, then there was a system in administration. So administration system changed. What happened was, so there was no more king, no more monarchy in the state. So from that time onwards, governor of the state, being the head of state, he is now looking after this institute as a president of this institute whenever there is governors are there. And the administration is looked after by director, and head of this NIT as a president is the governor today. So today we had a program. This is a Buddhist what you call this? It's a program of internationally we are organized combined with the state. Yeah? So purpose of this too was to flourish, to propagate Buddhism all over the world, to bring peace, harmony, and to all the sentient beings. Before I give my introduction, I will speak one sentence, only one sentence, for all the sentient beings of not only this world, but the six planets or the six realms. We call it Dawari 2. There are six realms as per the formula invented by His Holiness Crown Prince Siddhartha from Bodh Gaya or Magadha in those days. So it says, according to the Crown Prince Siddhartha's formula, let all the sentient beings be free from all the sufferings and be free from root cause of sufferings. Okay, that is a formula, basic or say Koho Go or ABCD formula invented by His Holiness or His Royal Highness Crown Prince Siddhartha. Now, you want my introduction. My name is Yongda. I born in Denjong. People call it, our original name is Denjong. This name was given by Crown Prince Siddhartha as Lotus-born Buddha. People say Lotus-born Buddha is different than Crown Prince Siddhartha. However, all the masters, holy masters, taught me that Lotus-born Buddha is the incarnation of Crown Prince Siddhartha. Six realms means you must have heard the hell realm. The lowest realm is the hell realm, Narkalok. Second one is the hungry ghost realm, equator. Now above the equator towards the North Pole, human realm, semi-human realm, and god and goddesses realm. Now, I've got to know that a lot of you are interested in history, so I hope सबको भी मजा आया होगा इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान के। अब जो हमारा टूर है वो एंड की तरफ पहुंच ही गया है। अब जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है बुद्धा पार्क, जो सिक्किम के रावंगला रीजन में है। इसे तथागाटा साल भी बोला जाता है। ये साउथ सिक्किम में लोकेटेड है और ये 2006 से 2013 के बीच में बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा फीचर है जो गौतम बुद्धा की जो स्टैचू है वो 130 फीट लंबी है।
इस स्टैचू को उनकी 2550th बर्थ एनिवर्सरी पे मार्क किया गया था। ये स्टैचू जो 14th दलाई लामा है, उन्होंने कॉन्सिक्रेट किया था 25 मार्च को 2013 में, और अब ये एक स्टॉप बन गया है हिमालयन बुद्धिस्ट सर्किट का। तो आप सब लोग अब इसे देख लीजिए, उसके बाद हम अपने लास्ट स्पॉट की तरफ बढ़ेंगे।
ओके सो अभी हम लोग हमारे लास्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे तो कोई भी ट्रिप शॉपिंग के बिना अधूरी है सो नाउ वील गो टू वन सेक यस वील गो टू महात्मा गांधी मार्ग गैंगटॉक में यू कैन सी इट्स बिहाइंड मी सो this is the most prominent tourist spot in Gangtok. It's a shopper's delight since all kinds of things are available in the market. The name of the market comes from the Mahatma Gandhi statue, which is there in the marketplace. मेरे पीछे ही आप लोग को दिख रहा होगा. So it is half a kilometer long and it always remains crowded since it's the main shopping destination for tourists as well as locals. अगर आपको कुछ शॉप करना है then please just go ahead. So we are at MG Road, which is the main area for shopping in Sikkim. Lots of shops down this road, I believe, and you can actually buy anything here, apparently. So let's go check. So it started drizzling a bit, and as you can see, everything is wet in like less than 5 minutes. Now, in this market, you find a lot of souvenir shops like this one. You also have a lot of tea shops. I spotted one here, which is Golden Tips, which is apparently quite famous for tea here. So let's go check that one out. So we're actually in the store now at Golden Tips, and they've got some lovely teas here, a really wide selection of teas, and they also sell lots of kettles, cups, saucers, really interesting ones. So if you're a tea drinker, you might want to look at those. Now I'm looking for some local Sikkimese tea because I've been drinking it everywhere here, and it tastes absolutely really good. So I'm gonna go check it out. So I found what I'm looking for, and I'm gonna get some tea. Some Momo steamers there. So I've spotted this quaint little barber shop, and Adi has decided he wants to have a head massage. So I'm gonna allow some luxury on this trip as well. So that is just 30 bucks. Now this market mainly has a lot of woolen stores, as you can see here, lots of woolens and a lot of souvenir shops as well. And I spotted a really nice one, so let's go see. So I spotted a lot of knickknacks here, souvenirs, and they make great gifts. You have a tiny little prayer wheel. You've got, all these hangings here, which are also really nice. So I'm just going to take a look around and pick some things. So I found some knickknacks for my family and friends, and I'm just going to pick up these.
they also have a cinema here, so you can watch a movie as well in the market. So we are outside Roll House, which is really famous for rolls and momos. Unfortunately, it's all veg, which is why I don't think I'm going to go in there. But if you're a vegetarian and you're here, you should definitely try it because it's highly recommended. तो अब हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली। अब हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है और अब आप अपने-अपने होटल पे, घर पे जाके आराम कर सकते हैं। अटेंडेंस फॉर्म भेजा था चैट बॉक्स में, वो भर लेना। एंड थैंक यू। अनिंदिता ताई। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ये जवानी है दीवानी में डायलॉग तो है ही, लाइफ में जितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए यही इसी पल का मजा लेते हैं. So we could not cover all the destinations today, so we'll have the second tour very soon where we'll cover the remaining destinations. And also now I would like to give the vote of thanks. Firstly, we'll thank Rushikesh Dada for taking out time from your schedule and helping us live stream the event. Now I would like to thank all the leaders, our CRs, Advait Dada and Riddhi Tai, without whom this would not be possible. And lastly, thanks to all the volunteers for participating wholeheartedly and making this a huge success. Hope to have more such sessions soon. And I hope everyone has filled the attendance form. It won't be shared in the group this time. And have a great evening ahead. Stay safe and participate in more activities. Keep on participating, keep on enjoying. Thank you. Yes, one more small thing. If anyone wants this presentation or this virtual trip to view it again, so we are more than happy to share it with you as a viewer. So you can contact me personally on my WhatsApp and then I'll share it with you. Thank you. Thank you, Tai. Bye. Good night.